अछि। First question. The ideal of welfare state in the India Constitution is enshrined in its welfare state जो जिनसटा एटा कोठी लिखाई के अछि कोठी प्रकाशित अछि Preamble रे DPSP रे या फंडामेंटल राइट्स या 7th शेड्यूल कोदरे DPSP रे अर्थात Directive Principles of State Policy रे तेतरे ही कहीं के अछि इंस्ट्रूमेंट ही अछि The Panchayat Raj institutions are established as per constitutional directions of the जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन बा पंचायत राज सिस्टम्स टा कहार डायरेक्शन रे तैयारी कराइथला फंडामेंटल राइट्स रे ना फंडामेंटल ड्यूटीज पई ना डीपीएसपी पई या नन ऑफ द अबव का पई ताली डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी पई एटा को एस्टैब्लिश करा जायतला पंचायत राज सिस्टम्स राइट Which part of the constitutions of India declare the ideal of welfare state? Okay, question repeat हला welfare state हला ideal of welfare state को उधर लिखा गया अछि Directive Principles of State Policy रे Organizations of village panchayat is based on organizations of village panchayat based on socialist principle जोटा नेहरूियन मॉडल कहा जाए या गांधीयन प्रिंसिपल्स या लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स या ऑल ऑफ द अबव को उधर अछि विलेज पंचायतटा कहाँ ऊपर बेस करे गांधीयन प्रिंसिपल राइट वेरी गुड गांधीयन प्रिंसिपल ऊपर रिलेटेड अछि विलेज पंचायत राइट Which article of the Constitution directs the state government to organize village panchayat? Village panchayat रो आर्टिकल केते आर्टिकल केते विलेज पंचायत आर्टिकल केते 40 आर्टिकल 40 होची विलेज पंचायत 50 जो मैंने कहूच रेक्टिफाई करनियो 40 हवा Which of the following statement is correct regarding to the DPSP? DPSP पर दीटा स्टेटमेंट देइछि बा केतरा हां दीटा स्टेटमेंट देइछि कोटा करेक्ट अछि पचाछि ओके फर्स्ट स्टेटमेंट देइछि in case of a conflict between the DPSP and the fundamental right the DPSP shall prevail in the courts या ऑप्शन बी अछि the fundamental rights are not unlimited and citizens are subjected to reasonable restrictions the DPSP are subject to any constitutional limitations ताले कोटा ठीक अछि ओनली बी ठीक अछि ओनली ए या बोथ या नाइदर नॉर कोटा है जो ताले ए ठीक अछि ओनली बी ठीक अछि वेरी गुड ओनली बी ठीक अछि हला ओनली बी ठीक अछि बा ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर एटा तो फर्स्ट कथा भूल अछि इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट डीपीएसपी को प्रिवेल्स कर कोर्ट रे तो प्रिवेल्स करा जाई परिबो नै एटा तो भूल अछि फर्स्ट कथा हला ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर Which of the following is the directive principle of states एमानक मधुर कोडा डीपीएसपी रे डीपीएसपी अंडर रे जाउछि बा डीपीएसपी अंतर्गत अछि protections of life and personal liberty formations of gram panchayats protections of interest of minorities or abolitions of untouchability हाँ डीपीएसपी अंडर रे कोडा जाउछि ग्राम पंचायत राइट ग्राम पंचायत फॉर्मेशंस ऑफ ग्राम पंचायत होची कौन डीपीएसपी अंडर रे जाउची Which of the following part is related to the DPSP? Directive Principle को पार्ट रही को पार्ट रही DPSP को पार्ट रे ताको न करा जाइए पार्ट 4 4A 5 और 6 पार्ट 4 रे
ए हबनी पार्ट 4 रे हला which one of the following directive principles is not based on a socialistic principle okay not based पचारची socialistic principle मन मधुर कोटा जाऊ नाही बोली पचारची equal pay for equal work to all equal justice of free legal aid uniform civil code या preventions of concentrations of wealth and means of productions ताले कोटा is not पचारची ओके कोटा ही socialist principle रे कोडा जीवन यूनिफॉर्म सिविल कोडा जीवन वेरी गुड दिस इज आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड सोशलिस्ट प्रिंसिपल रे आसीबो नाही ताले एटा को प्रिंसिपल रे आसीबो एटा ताले को प्रिंसिपल यूनिफॉर्म सिविल कोडा को जदी सोशलिस्ट प्रिंसिपल रे एटा आसीबो नाही ताले को प्रिंसिपल रे आसीबो लिबरल प्रिंसिपल वेरी गुड लिबरल प्रिंसिपल रे आसीबो मैच द फॉलोइंग देछि ओके मैच द फॉलोइंग देछि एटी ऑप्शन देछि चूज करके कुह इक्वल जस्टिस फॉर फ्री लीगल एड प्रोविजंस देछि तासर आर्टिकल देछि हला को आर्टिकल सहित कोडा आर्टिकल अछि जॉइन करके कुह राइट टू वर्क चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन बिलो द एज ऑफ 6 इयर्स या प्रोटेक्शंस ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट कोडा का सहित रहबो आंसर इज 2 ओके आउ गार कौन अच्छी 3 4 डी हम 3 4 तो करदेल आउ ए ऑप्शन टा रहीगला ए ऑप्शन टा भी कर दियो डी हाउ आम देखा ताले कोटा कौन हो ठीक अच्छे इक्वल जस्टिस गोटे गोटे आंसर दियो इक्वल जस्टिस फॉर फ्री लीगल एड आर्टिकल केते इक्वल जस्टिस फॉर फ्री लीगल एड आर्टिकल केते फास्ट आर्टिकल केते 39 ए वेरी गुड ए होची 4 अर्थात 3 ऑप्शन एलिमिनेट करो 4 ऑप्शन को एलिमिनेट करो एटा सरीगला आम केवल 1 और 2 भितर जानिबार अछि राइट टू वर्क आर्टिकल केते राइट टू वर्क आर्टिकल केते राइट टू वर्क आर्टिकल केते 45 41 राइट टू वर्क आर्टिकल होची 41 बी इज 1 बी 1 हे गेल ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर ठीक अच्छे 2 ही जीव तापर देखिया चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन बिलो द एज ऑफ 6 इयर्स होची आर्टिकल 48 ए राइट जोटा को चेंज करा जाए कि कोडी फंडामेंटल राइट्स रे 21 ए को 86 अमेंडमेंट अनुसार चेंज करा गला जोटा हम जानिछे बहुत भल भाव ओके एजुकेशन जोटा 48 ए रही एंड ता सह रहा कौन प्रोटेक्शंस एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट आर्टिकल होची के 45 ओहो सॉरी मु उल्टा लिखिदेली उल्टा लिखिदेली चाइल्डहुड केयर होची 45 इम्प्रूवमेंट होची 48 ए राइट उल्टा लिखिले उल्टा हाँ सॉरी चाइल्डहुड केयर फंड एटा हूँ 45 हाँ एटा जोटा चेंज करागला फंडामेंटल राइट्स को एंड एटा हूँ के 48 एनवायरनमेंट इम्प्रूवमेंट करने प्रोटेक्शंस करने जोटा आर्टिकल हूँ के 48 ए होगला तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर ओके तो पचार व्हिच वन ऑफ द इज नॉट करेक्टली मैच पचार आर्टिकल 39 ए इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड और 48 सेपरेशंस ऑफ जुडिशियर फ्रॉम एग्जीक्यूटिव ताले कोडा भूल अछि
48 वेरी गुड एटा ए ऑप्शनटा भूल अछि ताले कोडा ठीक हबो को कोडा ठीक हबो सेपरेशंस ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव आर्टिकल केते केते आर्टिकल 51 50 यस separations of judiciary from executive होची केते 50 article 50 which among the following part of the constitution deals with the directive principles of state policy 4 Article 45 under the DPSP of the Indian Constitution provides for what? Article 45 कौन provide कर right of minorities to establish educational institutions, free and compulsory primary education, education for weaker sections of the country या giving financial assistance to less advanced states कौन है जीवो आर्टिकल 45 कोडा है जीवो 2 फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन पिला मानक जोटा दिहावा पई 6 रु 14 इयर्स भितर सेटा होची आर्टिकल 45 अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस concentrations of wealth is the violations of dash concentrations of wealth is the violations of right to equality Directive Principles of State Policy, right to freedom या concept of welfare. Concentrations of wealth is the violations of what? कार violations? DPSP ର violations है तो समान, right? In which of the following the provisions for the protections and improvement of the environment and safeguarding for the forest and wildlife are found in the constitutions in India. कोथरे फाउंड करा जे provisions for protections and improvement of the environment and safeguarding of forest and wildlife. Only in DPSP, only in fundamental duties, या both A and B and none of the above. ताले कोथरे फाउंड करा जे both हबा केवल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रे नहीं फंडामेंटल ड्यूटीज रे मध्य मेंशन अछि ओके ताले both हे जिवो A और B दीटा गहे जिवो In India, separations of judiciary from the executive is enjoyed by separations of judiciary from executive is enjoyed by the preamble of the constitutions DPSP 7 scheduled or conventional practice DPSP by Directive Principles of State Policy जोटा separation judiciary article होची 50 Which article of Indian Constitutions is related to Indian foreign policy? Indian foreign policy सहित कोटा रिलेटेड अछि केते आर्टिकल केते 51 वेरी गुड आर्टिकल 51 होची कोन इंडियन फॉरेन पॉलिसी फॉरेन कंट्री सहित पीस और सिक्योरिटी जो थाए इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करबा से जिन सहित था इंडियन फॉरेन पॉलिसी आर्टिकल 51 मन रखिबो Who among the following statements are correct regarding to the DPSP? They act as the instrument of the instructions. They are borrowed from the constitutions of Ireland. They are non-justiciable in the court of law या all of the above. Correct पचाची कोड़ा है जवाब all of the above बाबा right they act as instrument of instruction रो गुड इंस्ट्रूमेंट भली सब काम करे ठीक अछि आइलैंड रो तो बरो करा जाय एटा भी हम जान छी एंड ता सहित दिस इज नॉन जस्टिसेबल the concept of welfare state is found in the constitutions of India which of the following can be amended by special majority एमानक मधुर कोटा स्पेशल मेजॉरिटी द्वारा अमेंड करा जाय पारिबो DPSP rules of procedure in parliament admissions of new state
या यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन पार्लियामेंट. Which of the following स्पेशल मेजोरिटी द्वारा कोटा को DPSP राइट. DPSP when and which committee suggested the justiciable and non-justiciable types of rights. को कमिटी सजेस्ट करथिला जो जस्टिसेबल और नॉन जस्टिसेबल टाइप ऑफ राइट्स को माने ताकू सजेस्ट करथिले. साप्रू कमिटी, बलवंत राय मेहता कमिटी, भुरेलाल कमिटी या नॉन ऑफ द अबव. को कमिटी ताले करथिला. को कमिटी बलवंत राय मेहता कमिटी. साप्रू कमिटी है मन रख ए हम आंसर. साप्रू कमिटी सजेस्टेड करथिला जे दैट कि जो फंडामेंटल राइट्स रही इंडिविजुअल राइट्स जोराक रही ओके तो सेगुराक जस्टिसेबल कोडा जस्टिसेबल कोडा नॉन जस्टिसेबल सेगुराक से सजेस्ट करथिली. तापरे पचारची व्हेन पचारची एक्जाक्टली आंसर देनी तो व्हेन पचार मन रख 1945 रे. ओके 1945 रे. ओके व्हाट आर द आइडियाज दैट a state must keep in mind while farming policies called fundamental rights, directive principle of state policy, Gandhian principles या socialism. What are the ideas that a state must keep in mind while farming policies called what? DPSP. Which of the following statement is true regarding DPSP? The concept was mentioned in Government of India Act 1935. DPSP are not legally enforceable. DPSP concept को कौन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत सरकार 1935 रे मेंशन करा जायछि. एंड सेकेंड ऑप्शन स्टेटमेंट देछि DPSP आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल. ताले कोडा कोडा ठीक अछि. नॉन ओनली टू तो ठीक अच्छे लीगली एनफोर्सेबल नुह. ऑप्शन वन स्टेटमेंट 1 भी ठीक अच्छे. ओके जहाँ भी किसी कॉन्सेप्ट अच्छी मेंशन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे ही मेंशन अच्छी DPSP रो तो बोथ हो 1 and 2 बोथ स्टेटमेंट ठीक अच्छी है. बोथ 1 and 2 हो. Which of the following articles consist of equal pay for equal work for men and women? Equal pay for equal work article कहते equal pay for equal work article कहते 41 39 very good 39 equal pay for equal work होची पुरुष जाति हो कि स्त्री जाति हो जो मैंने भी काम कर प्रति क्षेत्र में ठीक अच्छे पुरुष मान भी जी पे रहा कथा स्त्री मान भी से पे रहा इक्वाल पे रहा कथा से आर्टिकल 39 रे कौन मेंशन है कि अच्छे. व्हिच ऑफ द आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट द गांधीयन प्रिंसिपल्स आर्टिकल केते कोड केते आर्टिकल 40 रू 48 41 रू 48 42 या 40 केते हम 41 रू 48 40 रू 48 41 केमती हम
40 रु स्टार्ट हम ना विलेज पंचायत पूरा ग्राम पंचायत जोटा गांधीयन प्रिंसिपल 40 रु स्टार्ट हम बुझेला तो केते ला 40 रु 48 तीनटा जाक गांधीयन प्रिंसिपल गला तो कौन हो 40 रु 48 भितर हो Which article states about the uniform civil code throughout the country? Uniform civil code. Uniform civil code article कितने? 44. Which of the new DPSP was added to the Constitution through the 42nd Amendment Act? 42nd Amendment Act रे कोटा add करा जाइथिला DPSP रे to promote equal justice and provide free legal aid to the poor, promotions international peace and security between nations, state need to minimize inequalities in income, status, facilities and opportunities, prohibit the consumptions of intoxicating drinks and drugs. 42nd Amendment Act रे कोटा को add करा जाइथिला DPSP रे Code A. Very good. To promote equal justice and to provide free and legal aid to the poor. ठीक अच्छी एटा को कौन करथिला DPSP रे 42nd Amendment Act रे ऐड करा जायथिला. Which amendment act the elementary educations for all children a fundamental right? DPSP रे 45 आर्टिकल ले थिला ताकू को अमेंडमेंट एक्ट रे जो चिल्ड्रन मानकर फंडामेंटल राइट्स को चेंज करा गला कोडा 86th अमेंडमेंट एक्ट ओके दीटा अछि ए भितर कोडा 86th अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 21 या 86th अमेंडमेंट आर्टिकल 21A मन रखिबा सेति पय क्वेश्चन दीटा देछि 21 नो 21A रे ऐड करा गला हला 21A रे ऐड करा जायथिला केबे करा जायथिला 2002 रे From which country has the Indian Constitution borrowed DPSP? DPSP को कंट्री रू बरो करा जाइछि DPSP को कंट्री रू बरो करा जाइछि आयरलैंड वेरी गुड आयरिश कंट्री बाय आयरलैंड रू Which of the following Supreme Court decisions stated that Directive Principles of State policy can't override fundamental rights? DPSP टा ओवरराइड हबो नै फंडामेंटल राइट्स ऊपर बोली तले कोटा सुप्रीम कोर्ट रो को डिसीजन एटा को कुहा जायतिला इन द स्टेट ऑफ मैड्रास वर्सेस चंपक दोरायराजन केस इन केशवानंद भारती केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया या यूनियन कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केशवानंद भारती केस केशवानंद भारती केस स्टेट ऑफ मद्रास एंड चंपक दोरायराजन केस रही एटा को कहा जायथिला कि डायरेक्टिव डीपीएसपी टा ओवरराइड हबनी फंडामेंटल राइट्स ऊपर ठीक अछि Directive principles of state policy are like a check on a bank payable to the conventions of the bank. Who made these observations? So, a statement ta kiye कह देइथिले DPSP are like a check on a bank payable at the conventions of the bank. किए करथिले नेहरू कहथिले केटी शाह वेरी गुड प्रोफेसर केटी शाह कहथिले नेहरू नुआ केटी शाह कहथिले हु एमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डीपीएसपी टा कौन पॉजिटिव इंजेक्शंस या नेगेटिव इंजेक्शंस जस्टिसेबल इंजेक्शंस या नॉन ऑफ द अबव कौन हम जस्टिसेबल जस्टिसेबल केमती हम डीपीएसपी तो जस्टिस या करा जाए ना
पॉजिटिव इंजेक्शन रे रहबो पॉजिटिव इंजेक्शन The doctrine of harmonious constructions was propounded by Supreme Court in which of the following cases? Doctrine of harmonious Supreme Court रो को केस रे एटा को माने सजेस्टेड करा जायथला ठीक अछि केरला एजुकेशंस बिल 1957 केस वेंकटरमण वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास गोलकनाथ वर्सेस ओआरएस गोलकनाथ एंड ओआरएस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब या केशवानंद भारती वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला को केस रे तले डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन को प्रोफाउंड करा जायतिला कोडा को केरला एजुकेशन बिल 1957 रे ही एडा को कोन सुप्रीम कोर्ट माने ए केस रे केरला एजुकेशन बिल रे केस रे डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस को कंस्ट्रक्शंस करा जायतिला The idea of India as a welfare state is found in कोदर अछि The idea of India as a welfare state is found in DPSP Preamble नागी इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट ए प्रियम्बल नागी बोथ हवा ए भी हवा एंड सी हवा सेठी तमे डीपीएसपी दीटा क्वेश्चन गलानी ऑलरेडी रिपीट होईची बिकॉज सेतरे प्रियम्बल नथिला सेति पे प्रियम्बल आंसर हमें दे नथिले बिकॉज एटी प्रियम्बल अछि तो प्रियम्बल ही करेक्ट प्रियम्बल मध्य हबा एंड डीपीएसपी तो जानिछ सब डीपीएसपी रे अछि ता सब प्रियम्बल में मध्य वेलफेयर स्टेट विषय लिखा अछि बुझिला द कांसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज इंक्लूड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द The concept of welfare state is include in the Constitution of India in the include करा गला कोदरे प्रथमे प्रियम्बल थिला तापर डीपीएसपी रे इंक्लूड करा गला हला डीपीएसपी हम आंसर Which one of the following is not the objective of the Directive Principles of State policy? एमानक मधुर कोटा object नुहा is not the object of DPSP. Established welfare state, ensure socio-economic justice, establish a religious state, establish a secular state. कोटा नुहा DPSP रा गोटे object नुहा पचारिछि रिलीजियस स्टेट तैयारी करबा एटा ऑब्जेक्ट नुहा प्रिंसिपल जो डीपीएसपी रा कोथरे भी नहीं रिलीजियस स्टेट आमर नहीं किछे ओके द पर्पस ऑफ द इंक्लूजन ऑफ डीपीएसपी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टैब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सोशल डेमोक्रेसी गांधीयन डेमोक्रेसी और सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ताल पर्पस कौन थिला डीपीएसपी को तैयारी करबा पई कॉन्स्टिट्यूशन रे तार एग्जैक्टली पर्पस व एम कौन थिला को टाइप डेमोक्रेसी को तैयारी करबा पई एटा करा जायथला पॉलिटिकल सोशल गांधीयन सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी तैयारी करबा पई अर्थनैतिक और सामाजिक गणतंत्र राष्ट्र तैयारी करबा पई कोन करे जायथला डीपीएसपी को कॉन्स्टिट्यूशन रे एस्टैब्लिश करा जायथला द डीपीएसपी आर डैश जस्टिसेबल non-justiciable fundamental rights or none of the above कौन हो डीपीएसपी आर Directive Principles of State policy आर डैश non-justiciable बट आर प्रीवियस रु गोटे क्वेश्चन आसला पॉजिटिव इंजेक्शंस नेगेटिव इंजेक्शन जस्टिसेबल लिखिला मोस्ट ऑफ द पिला तो जस्टिसेबल कहला डीपीएसपी रे जस्टिस तार किछ न थाए नॉन जस्टिसेबल
The Indian constitutions borrowed the DPSP from the constitutions of which of the following countries? ये तो आयरलैंड जानचो. Equal pay for equal work has been ensured in the Indian constitutions as one of the DPSP. According to the constitutions of India, which of the following are fundamental to the governance of country? Are fundamental to the governance of the country. Koda. Fundamental rights, fundamental duties, then Directive Principle of State Policy and fundamental rights and fundamental duties. Koda ijiba. DPSP. Which one of the following is included in the Directive Principle of State Policy? Could include achi. Protections is respect of convention of offence, protections of life and personal liberty, protections of interest of minorities, equal pay for equal work for both men and women. कौन है जीवा? कोडा एमन मतलब कोडा DPSP रो कोडा D. Equal pay for equal work for both men and women. क्वेश्चन आज DPSP रू एथिपाई तुम मैंने आंसर दे पारछ DPSP रो कि पर्टिकुलर मु सेशन आनी DPSP रो सेथिपाई तार आंसर DPSP रो दिया जाउछि बट मु जदि मिक्स क्वेश्चन आनथांती तो डेफिनेटली किसी ना किसी भूल हेइतांता. Which of the following is not a fundamental right? एमान मधुर कोडा गोटे फंडामेंटल राइट नुह. Right against exploitations, equal pay for equal work, equality before law, your right to freedom of religion. Is it not पचारछि? कोडा जीवा B. Equal pay for equal work एटा होछि DPSP रो. बाकी ये सब exploitations, equality before law, right to freedom of religion is मन सब वेले fundamental rights. Which one of the following articles of the Directive Principle of State Policy deals with the promotions of internal peace and security? Promotions of internal peace and security ପାଇଁ article केते? फिफ्टी वन इंटरनेशनल पीस जो फॉरेन पॉलिसी जोटा कह जाए. ओके इंटरनेशनल पीस नहीं फॉरेन पॉलिसी थिले मध्य तार आंसर सेम हम. आर्टिकल 51. Which article of the Indian Constitution is related to Indian foreign policy? कही सारे. Article 51 is the correct answer. In constitutions of India, promotions of internal peace and security is included in what? DPSP. Which principle among following was added to the Directive Principle of State Policy by the 42nd Amendment Act of the Constitutions? 42nd Amendment Act अनुसार कोटा को ऐड करा थिला. Equal pay for equal work, participations of workers, right to work, securing living wages and human conditions. फोर्टी सेकेंड आमेंडमेंट एक्ट रे कोटा को माने ऐड करा जायतिला. एजुकेशन तो जमा 42nd आमेंडमेंट एक्ट करा जायतिनी. केते हवा? बी केवल 2 जन आंसर देइचंती आशीष और रीतांजलि से मानकर आंसर ठीक अच्छी. पार्टिसिपेशंस ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज केवल आंसर हम. ओके एंड टॉप ही ऑल्सो 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे कौन कर पार्टिसिपेशंस ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज. ठीक अच्छे यहाँ को ऐड कर 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे.
ताले आर्टिकल केते पचारछि which article of the Indian Constitution has provisions for participation of workers in the management industries article केते 43 43A 45 47 article केते आर्टिकल केते 43 B very good 43A 43A participation of workers in the management industries मानकरे वर्कर माने काम करे 43A which one of the following is not a directive principles एमान मधुर कोटा directive principles नुह पचारछि prohibitions of the consumptions of the intoxicating drinks cow protections environment protections या free educations to the children up to the age of 14 कोटा थिला कोटा DPSP नुह कोड़ा नुह नाई प्रोहिबिशंस ऑफ द कंजप्शंस ऑफ द इंटॉक्सिकेटिंग एटा जो ड्रिंक्स अच्छी ड्रिंक्स आउ ड्रग्स विषय जोटा करे सेटा डीपीएसपी रे अच्छी काउ प्रोटेक्शंस मध्ये अच्छी काउ स्लॉटर विषय जोटा अच्छी एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शंस मध्ये अच्छी ता सहित फ्री एजुकेशन एटा तो फंडामेंटल राइट्स को चेंज होला ना एटा नुह फ्री एजुकेशन टू द चिल्ड्रेन अप टू द एज ऑफ 14 एटा नुह which one of the following was not added to the 42nd amendment एमन कोडा 42nd amendment रे ऐड करा जाई न थिला protections of children and youth from the exploitations equal justice and free legal aid uniform civil code participations of the worker in the management of industries एटा तो करा जाई थिला कहले बाकी ए तीनटा भितर कोडा ऐड करा जाई नथिला को कोडा को ऐड करा जाई नथिला डी पर ऐड करा जाई थिला 42nd अमेंडमेंट रे जो पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज मानकर वर्कर्स मान करा जाय पई एडा करा थिला प्रोटेक्शंस ऑफ चिल्ड्रेन एंड यूथ फ्रॉम द एक्सप्लॉइटेशंस एडा भी करा जाय थिला एंड इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड मक्सर बट यूनिफॉर्म सिविल कोड को 42nd अमेंडमेंट रे ऐड करा जाय नथिला हला ताला आंसर हे जिवो कोन यूनिफॉर्म सिविल कोड हाउ आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डिफरेंट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी टा फंडामेंटल राइट्स टू केमिति डिफर माने केमिति ता डिफरेंट कोन केमिति फॉर्मर इज फॉर यूनियन गवर्नमेंट एंड लैटर इज स्टेट गवर्नमेंट फॉर्मर इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस वेयर एज द लैटर इज नॉट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट एनफोर्सेबल वेयर एज द फंडामेंटल राइट कैन बी एनफोर्स्ड या नॉन ऑफ द अबव एट जो फॉर्मर आउ लैटर लिखी एटा गोटे होची डीपीएसपी फॉर्मर फंडामेंटल राइट्स को लैटर बोली मेंशन करची तो से अनुसार कोटा डिफरेंट केमति थिला को सी एजवा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट एनफोर्सेबल वेयर द फंडामेंटल राइट्स कैन बी एनफोर्सेबल एटा ही आ जोगु ही ए दिटा डिफरेंट केमति करे ए जिंस परे एनफोर्सेबल एंड नॉन एनफोर्सेबल जोटा रोज which one of the following is not a directive principle of state एमान मधुर कोडा नुहा prohibitions of consumptions of the intoxicating drinking prohibiting of the slaughter of the calves protection and improvement of environment free educations up to age of the 16 years से क्वेश्चन रिपीट है राइट तो फ्री एजुकेशन ता नुहा फ्री एजुकेशन ता नुहा राइट सॉरी गला 50 क्वेश्चन ही थिला बहुत सारा क्वेश्चंस रिपीटेड थिला एंड केवल डीपीएसपी ही आंसर ता थिला नहीं हाँ ठीक अच्छे किसी असुविधा नहीं रिविजन हो गला सेटा बड़ कथा ता सहित क्वेश्चन जिते बड़े मु एक साथ मिक्स करके आनी से जना पड़ो के मन रखीच कि नहीं बोली ठीक अच्छे ओके 6:30 क्लास अच्छी आज ओडिशा जिके न हो पारे करेन्ट अफेयर क्लास हम आज इवनिंग 6:30 आज करेन्ट अफेयर क्लास हम ओके ओडिशा जिके न हो पारे करेन्ट अफेयर क्लास हम एंड तास राति 9 जमी क्लास हम तो ओडिया ग्रामर क्लास अच्छी भी हम बुझीगला ओके चलो
साढ़े 6:30 बेलू समस्त आसो करंट अफेयर क्लास हम आज ओडिशा जी कि ना सो थैंक यू गाइज थैंक यू फॉर व्यूइंग द क्लास तो जो मैंने लाइक करनी एंड तासह जो मैंने सब्सक्राइब जब चैनल को करनी नुआ पिला जॉइन कर सब्सक्राइब करनी एंड ताकि क्लास नोटिफिकेशन जहाँ आसो तक पाइज एंड डिजिटल ओडिशा टेलीग्राम लिंक रे जॉइन हो जाओ तुम मानक नोटिफिकेशन मिल जाए ओके हाँ आज करंट अफेयर क्लास ही हम इवनिंग 6:30 रे करंट अफेयर क्लास ही हम आज ओके एंड डेफिनेटली हम ओडिशा जी के आज मुझे रखी ठीक अच्छे ओके चलो थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू थैंक यू